अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑफशोर एक्सीडेंट लॉयर। ठीक हो गया नाज़रीन, तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स हम लोग गूगल से लेते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में हमें मज़ीद क्या डिटेल्स मिलती हैं। अच्छा जी, यहाँ एक कोई साइट खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। अच्छा जी, एक है FWF लॉ इंजरी अटर्नीज, ये इनकी साइट है। देखते हैं कि क्या कहते हैं। वर्किंग ऑफशोर can be exciting, but it can also be dangerous, no matter how many safety precautions you take. Accidents and injuries are common and sometimes fatal. Offshore workers can experience devastating injuries caused by dangerous conditions on offshore platforms, crew boats, jack-up rigs, and tankers. And in the ocean itself, workers often aren't sufficiently trained and work long hours with few breaks, making the risk of injury even higher. ठीक है, तो ये इन्होंने बाकी भी कोई अपना कोई डिस्क्रिप्शन दी भी है मज़ीद, इन्होंने ये भी आप पढ़ सकते हैं। मज़ीद कह रहे हैं कि when a serious injury occurs in an offshore accident, it can be emotionally and financially devastating for the victim. It can also be hard to determine where to start when it comes to recovering damages from personal injury or wrongful death. A good place to start is to contact an offshore accident lawyer with experience in personal injury and maritime law who can wade through the complex details of your case and help you get the best recovery possible. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ बता रहे हैं ऑफशोर एक्सीडेंट्स की। अभी देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। Offshore and oil field accidents are often preventable. They can happen during basket transfers, line handling, vessels collisions, and diving operations. Many accidents are the same as you'd encounter in many workplaces, such as equipment failures and slip and falls. But because working offshore is a more high-risk workplace environment, an injury may also result from a fire or explosion. Okay, despite the big budgets associated with the oil industry, there is sometimes very little training and oversight on an oil rig. This type of employer negligence can result in an unsafe working environment that leads to underqualified employees performing dangerous tasks that they aren't properly trained for, resulting in serious injury. Offshore accidents commonly lead to head trauma, spinal injuries, severe limbs, and other serious injuries. These injuries are often specifically caused by the first thing is oil rig injuries. Workers on oil rigs use complex and cumbersome equipment to drill and perform other tasks. Many workers aren't properly trained on how to use the needed equipment, which increases the risk of offshore accidents caused by human error. तो ये नीचे इन्होंने डैमेजेस भी बताए हुए हैं, इसके क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं इससे, और उसके बाद बताते हैं कि व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट योर ऑफशोर एक्सीडेंट केस। इसकी भी मज़ीद डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। फिर बताते हैं कि हाउ एन ऑफशोर एक्सीडेंट लॉयर कैन हेल्प यू, तो इन्होंने उसका भी एक प्रोसीजर बताया हुआ है आपको, इस पर भी आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं अपनी। फिर ये कहते हैं कि वाई हायर FWF टू हेल्प विद योर ऑफशोर एक्सीडेंट केस। इन्होंने अपनी साइट के बारे में बताया कि आप हमसे ही क्यों हेल्प लेना चाहेंगे या लेंगे। ठीक है, कुछ रिव्यूज़ भी दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर दूसरी साइट देखते हैं खोल के, उस साइट में हमारे लिए क्या है, ताकि वो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक है जी मॉन्टेगना मैरीटाइम लॉ। इधर देखते हैं कि इधर हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं। The ocean is the most dangerous workplace on the planet. U.S. maritime industries are found nearly every state, employing more than 40
it's 4 lakhs, I guess, workers across the nation. Maritime workers find employment in a variety of fields such as shipyards, marine terminals, fishing, aquaculture, seafood processing, commercial diving, and marine transportation. According to the Centers of Disease Control, maritime workers face a higher risk of fatality, injury, and illness than the average American worker. Okay, from slips and falls to equipment failures, collisions, fires, and unsafe work practices and negligence, offshore injuries usually require costly medical care, sometimes long-term. Catastrophic injuries can mean an injured worker who relies on his or her physical ability may not be able to return to work. This can be devastating for families, particularly if the worker is the sole breadwinner and can no longer earn a living. इसकी कुछ टाइप्स भी बताई गई हैं, वो भी देख सकते हैं आप. ठीक हो गया जी नाजरीन. तो ये टाइप्स मैं आपके सामने भी रख देता हूँ. पहली टाइप बता रहे हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इसके बारे में आगे मजीद इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने. उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल एंड बैक इंजरीज. उसके बाद थर्ड वन यू कैन सी स्लिप्स एंड फॉल्स, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ लिम्स एंड मैनी मोर. उसके बाद कहते हैं जी क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर ऑफशोर इंजरीज. ओके, इसके बाद मज़ीद डिटेल्स आपको दी हैं इन्होंने अपना एड्रेस आपके साथ, रोड मैप शो कर दिया है, मैप शो कर दिया है आपके साथ. उसके बाद कहते हैं कि आप फ्री कंसल्टेशन के लिए फ्री स्केड्यूल भी हमारे साथ एक वो कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं. ठीक है, अब हम कोई और साइट खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर लें. अच्छा जी, ये एक और साइट हमने खोली है, इधर देखते हैं कि क्या है. ओके, असिस्टिंग ऑफशोर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज. यहाँ पे क्या है जी कि The Willis law firm has decades of experience representing victims of offshore accidents. While the laws governing these types of injuries can be complex, our firm has the knowledge and resources necessary to help you recover the compensation you deserve. Okay, when we handle an accident case, we work to build a strong team who will carefully review and investigate the facts and circumstances surrounding your offshore injuries. Whether you have been injured in an offshore construction accident or a serious slip and fall, an oil rig drilling accident or explosion, or any other type of offshore accident, we understand what you are going through. Our legal team works hard to develop a successful case against all parties responsible for your injuries. ठीक हो गया. अच्छा जी, जो उसके बाद कुछ और बताया हुआ है इन्होंने, वो भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी कुछ कॉमन गलतियां बताई हैं ऑफशोर एक्सीडेंट इंजरीज़ की, उन पे भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं. मोस्टली सारी की सारी सेम है, सारी वेबसाइट्स पे तकरीबन सेम ही रीज़न्स बताई गई हैं. तो अब हम कोई और साइट खोलते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स मिलती हैं. अच्छा जी, ये मैरीटाइम इंजरी लॉयर्स. ठीक हो गया. इधर देखते हैं कि इसमें हमें क्या है कि क्या डिटेल मिलती हैं. इनकी 24/7 चैट भी अवेलेबल है. अच्छा जी, द मैरीटाइम लॉयर्स एट डॉयल डैनिश LLP हैव vast experience in maritime law and offshore claims and understand numerous federal maritime laws such as the Jones Act that apply to offshore claims. Our Texas firm works every day to help clients across the state lines and international borders in their maritime accident claims. We may be the most focused and qualified firm to evaluate and act on our maritime injury claim. Our practices areas are, the first one you can see is maritime law, maritime injuries, maritime accidents, offshore injury. उसके बाद देख सकते हैं longshoreman rights, seaman injury. उसके बाद देखें आप जोन्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड क्योर. द लास्ट वन यू कैन सी इज ऑयल रिग एक्सप्लोजन्स, ऑयल स्पिल क्लेम्स. तो ये इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है कि मैरीटाइम इंजरी लॉयर्स बेसिकली कहाँ है और इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. ठीक हो गया नाज़रीन.
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। जिस चीज़ को हमारी वीडियो पसंद आई है वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ठीक हो गया। जिसको नहीं भी पसंद आई वो भी कर ले। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।